Very good morning. Today we are going to discuss about determination of the angle between two vectors. हमारे पास कोई भी टू वेक्टर्स दिए होंगे, उनके बीच में एंगल को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए कि टू वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज सम वेक्टर a and here it is some vector b, then this is the angle between them. Now we have to find out this angle. हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है कि how much angle is there between these two vectors. ठीक है, तो देखिए ये हम करेंगे with the help of dot product of vectors. ठीक है, तो देखिए आपने since you know it very well that vector a dot vector b is equals to ab cos of theta. This we have already studied. Clear? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. This time the question is that we have to find out this angle theta. So from this formula we can also find out the value of angle theta between these two vectors. So from here we can write it as cos of theta is equals to vector a dot vector b divided by a into b. Clear? जहां पर a और b क्या है? a is the magnitude of vector a and b is the magnitude of vector b. Say it is equation number 1. Clear? This is the formula from where we will calculate the value of theta. ठीक है, अब देखिए वेक्टर a और वेक्टर b अगर हमारे पास गिवन है. क्लियर? सो इफ यू हैव वेक्टर a इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर i into ax प्लस यूनिट वेक्टर j into ay प्लस यूनिट वेक्टर k into az. इस तरह से आपके पास वेक्टर a गिवन है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एंड सिमिलरली यू हैव गिवन वेक्टर b इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i bx प्लस यूनिट वेक्टर j by प्लस यूनिट वेक्टर k bz. तो इस तरह से आपके पास दोनों के दोनों वेक्टर्स गिवन है. अब आपने फाइंड आउट करना है क्या? cos theta equals to a vector dot b vector. Means now we will substitute all these values in this equation. इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. क्लियर? तो किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए या तो यहाँ पर इंडिविजुअली ये कैलकुलेट कर लीजिए या डायरेक्टली इसी फार्मूला में ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्लियर? तो इस फार्मूला में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं देन व्हाट हैपेंस? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो इक्वेशन 1 implies cos of theta is equals to, now here it is vector a and vector a is written here, so we can write it as unit vector I ax plus unit vector j ay plus unit vector k az. This is the value of vector a dot. Now we will substitute vector b equals to, that is I bx plus j by plus unit vector k bz. तो इस तरह से हमने राइट कर लिया डिवाइडेड बाय. नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो आप चाहे तो यहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इंप्लाइज a is equal to magnitude of vector a and it is equals to magnitude of a vector, you know very well, that is under root ax square plus ay square plus az square. इस तरह से we can find out the magnitude of vector a. Similarly we have to find out the magnitude of vector b and we can say also b is equal to magnitude of vector b, so we can write it as bx square plus by square plus bz square. So these are the values which we have to substitute in the
इक्वेशन नंबर 1। देखिए वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी आपके पास गिवन है, वहां से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट कर लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर b substitute कर लिया है। Now it's the turn of a into b, means we have to substitute these values here, or we can say it is under root ax square plus ay square plus az square into under root bx square plus by square plus bz square. So we can write it like this. अब आपको पता है जब भी हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k सिर्फ इन्हीं के ही कोएफिशिएंट्स बचते हैं, बाकी सब के सब जीरो हो जाते हैं, बिकॉज i डॉट j इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो इसका मतलब है i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i सब क्या हो जाएंगे, जीरो। सिर्फ बचेगा कौन, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k वाले कोएफिशिएंट्स बचेंगे। इट मींस वी कैन राइट इट एज, इट इंप्लाइज cos of theta is equal to ax into bx plus ay into by plus az into bz divided by, it is here under root ax square plus ay square plus az square, साथ में आपके पास है मल्टीप्लाइड विद bx square plus by square plus bz square, और from here we can say this theta is equals to cos inverse। मैं cos को इस तरफ ले गया, cos inverse, बाकी within bracket you can write it is ax bx plus ay into by plus az into bz divided by, here it is under root ax square plus ay square plus az square under root bx square plus by square plus bz square. So this is the final formula to find out the angle between two vectors, vector a and vector b। ठीक है, फाइंड आउट कहां से किया, फ्रॉम दिस इक्वेशन cos theta is equal to vector a dot vector b divided by a into b। क्लियर? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वो भी कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ वी विल सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम के ऊपर बेस। तो यू हैव, I have written the numerical on the right side, extreme right of the board. You please note down it. Note down कर लीजिए उसको। So the numerical is in front of you. Here it is written, find the angle between two vectors. Vector A is given, unit vector I plus 2 into unit vector j plus unit vector k। इसी तरह से and vector b is equals to 2 into unit vector I minus j unit vector plus k unit vector, means आपके पास वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, दोनों के पास बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। so you can find it। So the solution to this numerical is, you have given that vector a is equal to unit vector I plus 2 into unit vector j plus unit vector k। ठीक है, and vector b is also given 2 into unit vector I minus unit vector j plus unit vector k। Now you have given two vectors
आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, इन दोनों के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, वहां से cos थीटा आएगा और वहां से थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो यू कैन से सिंस cos of theta is equals to, the formula is, that is vector A dot vector B divided by A into B. This is the general formula to find out the value of cos theta. You can substitute the value of vector A and vector B now. So it implies cos theta is equals to, now vector A is given, that is unit vector I plus 2 into unit vector J plus unit vector K dot, the B vector is also given, that is dot 2 into unit vector I minus unit vector J plus unit vector K. So this is the value of vector A and vector B which is given to us, divided by, now we have to write down the magnitude of vector A and vector B. तो देखिए magnitude of vector A हम find out कर सकते हैं। देखिए A is equals to magnitude of vector A and it is equal to, you know very well, it is square of ax square plus ay square plus az square, you know it very well। तो अभी देखिए जरा वेक्टर A में ax कितना गिवन है, ay कितना है, az कितना है, ax की जगह है 1, ay की जगह है 2 और az की जगह भी कितना है 1। So we can write it as under root ax square। देखिए सिंपल क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर I, इसका मतलब I के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है 1। सो ax की जगह कौन है 1, तो 1 स्क्वायर मींस ax स्क्वायर प्लस 2 इंस्टेड ऑफ ay इट मींस ay स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस az की जगह क्या है बेटा 1 मींस az स्क्वायर मींस 1 square. So this is magnitude of vector A. Similarly, we can find the magnitude of vector B. So into under root, here it is vector B. So this is bx, by given नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा 1, bz भी यहाँ पर क्या होगा 1। आप समझ रहे हो बात को, बिकॉज इट इज 2i इंटू यूनिट वेक्टर सॉरी माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k। तो यहां पर यूनिट वेक्टर j और k के कोएफिशिएंट्स कौन हैं 1 एंड 1। इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ by एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ bz। तो इसलिए हम राइट कर सकते हैं bx स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस here it is by square। now by square is minus 1 here, so we can write it as minus 1 whole square because here it is minus unit vector j, clear? So the component by is minus 1। similarly you have bz, so plus 1 square, clear? now we have to solve it। अब आपको पता है जब भी हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिर्फ i और i का कंपोनेंट्स बचते हैं आपस में, j और j के कंपोनेंट्स बचेंगे, k और k के कंपोनेंट्स आपस में बचेंगे, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 0। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इंप्लाइज cos of theta is equals to, now here it is I into 2i means 1 into 2, that is 2, clear? here it is 2j into minus j, here it is plus 2 and here it is minus 1, it means it is minus 2। here it is k and k means k के साथ कोएफिशिएंट है 1, यहां भी k के साथ कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 into 1 means plus 1 divided by, here it is 1 plus
2 2 is 4 plus 1 कितना हो गया? So it is 1 plus 4 plus 1 and under root here it is 4 plus 1 plus 1, or we can say this cos theta is equals to 2 minus 2 and here it is only 1, so it is 1 divided by here it is under root 6 and under root 6, so we can say cos of theta is equal to 1 upon 6 into 6 under root 6 into 6 कॉमन कर लिया अंडर रूट मैंने इनका, और we can say it is cos theta is equal to 1 by 6 because यहाँ 6 स्क्वायर हो गया या पेयर बन गया तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, it means only 6 is remaining, so from here we can say theta is equal to cos inverse 1 by 6. This is your answer. फिर भी आप अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें लॉग टेबल में से, देन यू कैन फाइंड इट विल कम आउट टू बी 80.4 डिग्री. अगर आप थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1 by 6 चेक करेंगे देन इट विल बी 80.4 डिग्री. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द एंगल बिटवीन these two vectors. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर गिवन वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? इसी तरह से आपको आ सकता है कि अगर ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या होना चाहिए. यू नो वेरी वेल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. ठीक है, तो अभी हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. तो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय.